Hello, students. I welcome you all in your English classes. In this class, we will study chapter 2 of your Beehive book, that is The Sound of Music. And in this chapter, we have two parts, part 1 and part 2. So, in this video, we will discuss only part 1, that is, Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. So now first we will discuss the title. The title itself is very interesting. Here the author says Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Now we all wonder. We are confused. How can you listen to sound when you can't hear? So this is something we will discover, that how Evelyn was able to listen to sound although she could not hear. जबकि वो सुन नहीं सकती थी, उसके बाद भी वो साउंड को कैसे फील करती, दैट इज इन द चैप्टर. सो नाउ बिफोर वी प्रोसीड विद द चैप्टर, लेट्स डिस्कस these 2 points. As you can see here, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. So someone has commented this about Evelyn. He says that although God took away her hearing power, she was impaired, but He gave her an extraordinary thing, and that was the sense of feeling. She could feel very deeply, far more deeply than the normal people. And that is why she was able to express music so beautifully, so well. She is a well-known multi-percussionist. She plays different percussion instruments like xylophone, drums. And the second point, read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. From here, we come to know the theme of the story and the message we get from the story. The story of Evelyn Glennie is a motivational story. It inspires all of us to overcome our physical disabilities and achieve our dreams and goals just like Evelyn did. So let's start the chapter from the very first paragraph. Rush hour crowds jostled for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. Here is the word jostle. Jostle means push roughly, धक्का देना जिसे कहते हैं crowd में. Slight means small and thin. So the scene is of the train platform. It is underground and there is a huge rush at the platform. People are pushing each other to get way. रास्ता पाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं. There is a small thin girl. It is किसकी बात हो रही है? एवलिन की. Evelyn is standing at the railway platform waiting for the train. And just as she feels the vibration of the approaching train, she realizes that the train is about to come. She gets nervous and excited. This is the train that will take Evelyn to London. She is going to London to learn music, as she has got admission in the Royal Academy of Music. Right now, Evelyn is in Scotland. Evelyn belongs to Scotland. Scotland is a country in Europe. So life in Scotland is not as fast as in London. London has a very fast life. It is urban, whereas Scotland has farms and countryside. So we can say Evelyn moving to a small country to a country that has very fast life. So that is why Evelyn is nervous, because she is leaving Scotland for London, and she is excited also because she is doing something that she always dreamt of. She is going to the Royal Academy of Music to learn music. Was her first day at the prestigious Royal Academy. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm.
टॉन्टिंग मीन्स होता है फ्राइटनिंग, स्कैरी, डरावना. टीनेजर आप जानते होंगे, पर्सन हु इज इन हिज teen age. So Evelyn is 17 years of age. She is a teenager and she is fresh from a Scottish farm, as Evelyn is from Scotland, which has more of farms and countryside. That is why यहाँ पर use हुआ है Scottish farm. She has not seen fast life. That is why she is nervous. And the writer says that she is fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Now, aspiring musician, जो म्यूजिशियन बनना चाहता है, आप कह सकते हैं, पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन. एंड प्रोफाउंडली डेफ मीन्स एब्सोल्यूटली डेफ, बिल्कुल जिसको सुनाई नहीं देता हो. सो एवलिन कुड नॉट हियर एंड दिस वॉज अ बिगर चैलेंज फॉर हर. Moving from a rural area to a fast life was a smaller challenge. Evelyn faced a much bigger challenge, that was her inability to hear. So writer is saying that जो एवलिन है, ये जो चैलेंज है उनका एक छोटी जगह से बड़ी जगह में जाने का, ये एक बहुत छोटा चैलेंज है उनके लिए. क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने था, और जो क्या था, उनकी जो पावर थी सुनने की वो नहीं थी. So that was what challenge was, what her inability to hear, ना सुनने का जो उनका आप कह सकते हैं disability थी, that was the very challenging for her. That was very challenging. So Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Now this is the paragraph 2. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Gradual means होता है in phases, different parts में बढ़ना. So slowly she started losing the power of hearing, and one day she was absolutely deaf. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she did not move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. Now यहाँ पर बात हो रही है एवलिन की मदर की. उनका नाम क्या है? Isabel. So Isabel Glennie is the name of Evelyn's mother. Evelyn's mother Isabel recollects one incident when Evelyn was 8 years old. She says that Evelyn was waiting for her turn to play the piano, but when her name was called out, she did not respond. And her mother realized that Evelyn did not respond to her name. That means she did not hear her name being called out. So for quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Conceal means होता है to hide, छुपाना. So as Evelyn lost her sense of hearing in phases, it was gradually process. In the beginning, when she could hear partially, she managed to hide this disability from her friends and teachers. Starting में जो एवलिन है, उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड टीचर्स से जो उनकी डेफनेस आप कह सकते हैं जो थी, वो आप कह सकते हैं वो छुपा पा रही थी. क्यों? क्योंकि वो पार्शियल थोड़ा बहुत सुन पा रही थी. लेकिन स्टार्टिंग की बात है कि जब वो आप कह सकते हैं वो है, बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated. डिटीरियोरेट मीन्स होता है रिड्यूस, कम होना. सो हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. स्पेशलिस्ट आप कह सकते हैं किसी भी फील्ड में स्पेशल होना, फील्ड एज एन अ डॉक्टर, किसी भी स्पेशलाइज हो किसी भी बॉडी पार्ट को आप कह सकते हैं ठीक करने में, उसको देखने में. सो स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए कहा गया. व्हेन एवलिन वाज 11 years old, her marks has started deteriorating and the headmistress requested her parents to take Evelyn to the doctor. So it was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. Impaired means होता है weakened, weak होना. So when the doctor checked upon Evelyn, he found out that Evelyn had lost the sense of hearing. Then finally जब उन्होंने स्पेशलिस्ट या डॉक्टर को दिखाया तो उनको
एवलिन इनकी मदर को पता चल गया या फिर डॉक्टर ने बता दिया कि जो एवलिन है वो अब सुन नहीं सकती हैं. सो दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल for the deaf. So the doctor advised Evelyn's parents that they should get hearing aids for her. Hearing aids equipment होता है that is fitted into your ear, जो कानों में लगता है, जो आपको हेल्प करता है to hear some extent, किसी आप कह सकते हैं काफ़ी मात्रा में आपको सुनने में हेल्प करता है. सो हेयरिंग एड कहते हैं उसे. सो ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट एवलिन शुड बी सेंड टू स्कूल फॉर द डेफ children. Now here is a line. Everything suddenly looked black, says Evelyn. Evelyn क्या कहते हैं? When Evelyn discovered that she could not hear and that she would be sent to a school for deaf children, that she was not as good as normal children, her world became colorless. It turned black. Colorless, जिसमें कोई color ना हो, and कैसा हो गया? ब्लैक. Now what does this mean? Everything suddenly looked black. It means that all of a sudden you get such bad news, you get some news that you don't expect, and in return we can say what which you not accept, and in return you get what? Blackness all around you. So this is very, we can say, weird experience. So that is how Evelyn responded to this news. इस तरीके से उन्होंने response किया. But Evelyn was not going to give up. Again a line is saying that this shows Evelyn had determination. Although even got such a shocking news, still she was determined and she did not want to give up. So she was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. Pursue means to follow. So as Evelyn was passionate about music, this news also did not break her. She was determined to live life like normal people and follow her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Xylophone एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वुडन बार्स होते हैं डिफरेंट लेंथ के. देखा होगा आप लोगों ने, मतलब आपने पढ़ा भी होगा xylophone क्या होता है. सो व्हेन एवलिन सॉ गर्ल, उसने एक लड़की को देखा जब, तब जो xylophone बजा रही थी, तो एवलिन को भी लगा कि उन्हें भी वो xylophone बजाना है, ये बजाना चाहिए. उनको बहुत इंटरेस्ट आया उसमें. सो मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. परक्यूशनिस्ट, अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, जो ड्रम बजाता है उसे हम कहते हैं परक्यूशनिस्ट. जैसे तबला बजाने वाले को भी हम कह सकते हैं परक्यूशनिस्ट. और वी कैन से जो डिफरेंट म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं डिफरेंट उन्हें हम कहते हैं परक्यूशनिस्ट. एंड पोटेंशियल होता है क्वालिटी ऑफ और एबिलिटी दैट कैन बी डिवेलप्ड, जो हम आगे और बढ़ा सकें. सो नाउ on one hand, Evelyn's teachers discouraged her because they knew that she could not hear and hearing was an important part of music. But जो Ron Forbes थे saw that Evelyn was very passionate about music, and so he decided something. अब उन्होंने क्या decide किया? He began by tuning 2 large drums to different notes. उन्होंने क्या किया? Ron Forbes thought that he would teach Evelyn to feel music, not hear. रॉन फॉर्ब ने उनके लिए, एवलिन के लिए क्या डिसाइड किया कि वो एवलिन को म्यूज़िक को फील करना सिखाएंगे, ना कि सुनना. सो ही टुक 2 large drums and he turned them to different notes. Drums are musical instruments, and he tuned them. He tuned each drum of different notes, so the sound produced by the drums was different. So it was distinct. Both the drums made different sounds. Then he told Evelyn, अब उन्होंने जब ड्रम नोट
दोनों डिफरेंट डिफरेंट नोट पे साउंड कर दिया उन्होंने। एवलिन को क्या कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। He said what? He said that don't try to listen through your ears. He said that try to sense it. Feel करना सीखो. Try to feel the music some other way. अब एवलिन क्या कहती हैं, Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower from the waist down. Now waist is middle of your body, middle part of your body. वेस्ट जिसे हम कहते हैं बॉडी में. सो नाउ रॉन हैड ट्यून बोथ द ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. सो एवलिन जो दोनों के ड्रम नोट्स थे वो किस तरीके से सुन पा रही थी, द अपर पार्ट ऑफ एवलिन्स बॉडी एंड above the waist could feel the higher notes, and the drum and this lower part of her body, the part down from the waist, could feel the lower notes. अब दो नोट्स के उन्होंने ड्रम की जो ट्यून थी उनको दो नोट्स अलग अलग नोट पे ट्यून किया था ड्रम की बीट को. तो जो एवलिन है वो किस तरीके से सुन पा रही थी, द अपर पार्ट ऑफ एवलिन्स बॉडी, अब वेस्ट के ऊपर वाला जो पार्ट था वो हायर नोट्स को फील कर पा रही थी, एंड लोअर पार्ट से वो जो लोअर नोट था उसको फील कर पा रही थी. So Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. So this is how Evelyn can listen to sound. Although she cannot hear, she can sense different notes in different parts of her body. All because of Ron Forbes, जो कि आप कह सकते हैं एवलिन का जिन्होंने पोटेंशियल पहचाना. I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. Now Evelyn क्या कहती हैं, Ron Forbes taught Evelyn to respond to different sounds, different parts of Evelyn's body. So जो एवलिन की बॉडी थी different parts से different sound पे respond करती थी, and that is how she could identify the sounds and the different vibrations. Now once she could identify the sounds and vibrations, the hurdle had been overcome and Evelyn's career went upward. उनका जो करियर था म्यूज़िक में वो आगे बढ़ता गया, and she had determination to become famous, a good musician, and she also did a lot of hard work. और उन्होंने हार्ड वर्क भी बहुत किया, सिर्फ ऐसे ही वो आप कह सकते हैं गुड म्यूजिशियन या फेमस म्यूजिशियन नहीं बनी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया. So she never looked back from that point onward. इस लाइन का क्या मतलब है, once Evelyn overcame the hurdle, she started sensing the different sounds through the different parts of her body. She progressed in her career. वो आगे ही बढ़ती गई. She toured the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. Youth, young people को कहते हैं, orchestra musician के ग्रुप को कहते हैं. So Evelyn toured the United Kingdom and performed with youth orchestra. By the time Evelyn reached the age of 16 years, she had decided to make music her life. 16 ईयर में उनको आप कह सकते हैं उन्होंने अपना पैशन डिसाइड कर लिया, उनका पैशन जो था म्यूज़िक उसको डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी लाइफ में इसी में आगे बढ़ेंगी. लाइफ उनकी क्या बन गई थी, म्यूज़िक. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. ऑडिशन मतलब उन्होंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन तो जानते होंगे आप लोग सब. गेव अ शॉर्ट जो दिस एवलिन गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वाज गुड इनफ. ऑडिशन उन्होंने दिया जिससे कि वो आप कह सकते हैं जो वहाँ के डायरेक्टर हैं वो बता सकें कि जो एवलिन है वो इस काम के लिए अच्छी हैं, गुड है या नहीं. सो Evelyn gave an audition for the admission to the Royal Academy of Music, and her score was the highest in the history of the academy. सबसे ज़्यादा उन्होंने स्कोर किया था. No other person had scored such a high score as Evelyn did. जैसा कि उन्होंने किया, किसी ने भी वैसा स्कोर नहीं किया. She gradually moved from orchestral work to solo performances. Orchestral work जो ग्रुप में वर्क होता था, म्यूजिशियन जो ग्रुप में गाते थे, लेकिन अब क्या किया एवलिन ने, अकेले गाना शुरू किया. सो इनिशियली एवलिन परफॉर्म्ड इन अ ग्रुप, एंड इनिशियली स्टार्टिंग में उन्होंने ग्रुप में परफॉर्म किया था. एंड एज शी गॉट वेल इन हर म्यूज़िक, जब वो म्यूज़िक में और अच्छी हो गई, जब उनको और कॉन्फिडेंट आ गया, सो शी स्टार्टेड परफॉर्मिंग अलोन, सोलो.
At the end of her 13-year course, she had captured most of the top awards. She had achieved all the top awards by the time she had completed her 3-year course at Royal Academy of Music. जब तक वो 3 साल का उनका कोर्स था, उस कोर्स के चलते उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स गेन कर लिए थे, बहुत सारे टॉप अवार्ड्स अचीव कर लिए थे. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, कोई भी जब उनको बोलता है कि आपने अच्छा काम किया, if anyone says that Evelyn has done something great, she does not acknowledge that. She is very humble and down to earth. बहुत ज़्यादा down to earth girl थी. If you work hard and know where you are going, you will get there. Now Evelyn क्या कहती हैं? Evelyn says that 2 important things for success are, firstly, hard work, and secondly, aim. She says that if you work hard and you have an aim, a target which you have to achieve, then you will definitely achieve it. अगर आप hard work करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, then you will definitely get your target, get success. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. Most sought after means most popular, जो बहुत demand में हो. So Evelyn also achieved her goal. She worked hard and she had an aim to become the topmost, the most famous, the most sought after musician of the world, and she did that. उन्होंने ऐसा किया भी. She gained mastery of almost 1,000 musical instruments and she is the most popular multi-percussionist of the world. She has a very busy schedule. She has programs and concerts all over the world. बहुत सारे आप कह सकते हैं प्रोग्राम और कॉन्सर्ट्स वो करती थी. बहुत ज़्यादा उनके पास काम था, बहुत ज़्यादा वो फेमस हो चुकी थी, और ऑल बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क and determination. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Intriguing means होता है fascinating, curious. So when you watch Evelyn work or perform so effortlessly, although she cannot hear, you get very curious because Evelyn can identify the slightest, the minute जिसे हम कहते हैं बहुत छोटे से छोटा साउंड भी made by the musical instrument, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेती थी. इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. अब यहाँ पर 2 hour डिस्कशन किनका चल रहा है? एवलिन एंड दैट राइटर जो उनके बारे में लिख रहा है. नाउ द राइटर डेबोरा कॉले टुक एवलिन्स इंटरव्यू विच लास्टेड फॉर 2 hours, 2 घंटे तक जो उनका इंटरव्यू था. एंड दैट राइटर सेज दैट एवलिन नेवर मिस्ड अ सिंगल वर्ड दैट शी स्पोक. ऐसा कुछ नहीं था जो उन्होंने नहीं बोला, नहीं बताया. Men with bushy beard give me trouble, she laughed. वो क्या कहते हैं? Evelyn says that those men who have long, huge, bushy beards give her trouble. Why do they give her trouble? Because when they speak, she cannot see their lip movement as their lips are covered with the bushy beards. आप कह सकते हैं क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, इसलिए वो लिपसिंग को देख के पहचानती थी कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है. एंड अगर वो सामने वाले पर्सन के फेस पे बहुत ज़्यादा बियर्ड है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल होता था. ये चीज़ ट्रबलसम होती थी ये चीज़ कि वो पहचान पाए या समझ पाए कि सामने वाला क्या कह रहा है. बट ऑल्सो नॉट ओनली द लिप्स, वो और भी चीज़ों से समझती थी. तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज. Means Evelyn says that she does not only see the lip movement of the person's face to make out what the person is speaking. She sees the whole face. That means the entire expression of that speaker, of that person, that makes Evelyn identify or know what the person is saying. She adds the expressions of the eyes helps Evelyn make out what the person sitting in front of her is saying. तभी वो पता लगा पाती थी कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, उसका पूरा फेशियल एक्सप्रेशन पहचान के लिपसिंग के साथ साथ. सो शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट. फ्लॉलेसली मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मिस्टेक के. एंड लिल्ट इज़ अ एक्सेंट, मतलब बोलने का तरीका जिसे हम कहते हैं वो होता है. सो राइटर सेज दैट एवलिन स्पीच इज़ फ्लॉलेस एंड शी हैज़ अ स्कॉटिश एक्सेंट. उनकी जो स्पीच थी, बोलने का तरीका था, वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस था, एकदम फ्लुएंट बोलती थी. एंड
उनका जो एक्सेंट था वो स्कॉटिश था। स्कॉटिश क्यों था? क्योंकि वो स्कॉटलैंड से थी, इसीलिए। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज। और वो क्या कहते हैं कि उनकी जो स्पीच है वो फ्लॉलेस क्यों है? क्यों? क्योंकि जब तक वो पढ़ सकती, 11 ईयर्स तक जब तक वो सुन पाती थी, तब तक उन्होंने क्या किया था? लैंग्वेज सीख ली थी। दैट इज़ वाई शी स्पीक्स क्लियरली। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन बट आफ्टर बिकमिंग डेफ, जब वो 11 साल के बाद, 11 ईयर के बाद डेफ हो गई थी, उसके बाद उन्होंने 2 नई लैंग्वेजेस सीखी थी, 2 न्यू लैंग्वेज। शी हैज़ लर्न फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज। सो वन वंडर्स दैट हाउ कुड शी लर्न दीज 2 न्यू लैंग्वेजेस ऑल्सो डिस्पाइट हर डेफनेस। डेफनेस के बाद भी उन्होंने ये 2 लैंग्वेज सीखी। दैट इज़ ऑल्सो अ वंडर, एक आप कह सकते हैं अविश्वसनीय बात है। For music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even my hair. Tingles, आप कह सकते हैं, causes a slight prickling or stinging sensation. छोटी सी अगर कोई आपको sting, अगर हम कह सकते हैं, वो लग जाए, उसका जो sensation होता है, उसकी जो feeling होती है, that is called tingles. So here Evelyn explains that how does she identify music. It creates sensation in her skin, in her cheekbones, and even in her hair. So every part of Evelyn's body responds to music. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. Now when she plays the xylophone, xylophone जब वो बजाती हैं, xylophone क्या होता है? स्टिक से बजाते हैं। तो the sticks जो sticks होती हैं, she uses sticks and she can sense the vibration of the sound produced by the xylophone pass through the sticks up into her fingertips. उस म्यूज़िक को वो जो स्टिक से वो बजाती थी, उस स्टिक के थ्रू अपनी फिंगर टिप्स पे आप कह सकते हैं सेंस कर पाती थी उस म्यूज़िक को। So by learning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. Resonances होता है echo of sound, sound का जो वापस से सुनाई देना, echo. So when Evelyn plays the drum, she leans towards the drum and she can feel the echo flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. Now there is different, अब अलग अलग तरीके से वो म्यूज़िक को फील करती थी। ये एक और तरीका था उनका म्यूज़िक को फील करने का। Whenever Evelyn performs, she performs on a wooden platform and she removes her shoes so that she can feel the vibration of the musical instrument pass through the floor into her feet and up her legs. That is how she can feel the sound of musical instruments. इस तरीके से वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड को फील करती थी फ्रॉम हर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अलग अलग पार्ट से वो म्यूज़िक को फील करती थी, जो कि आप कह सकते हैं उनको सिखाया था किसने? रॉन फॉब्स ने। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award. Now, Evelyn is a delight to hear. She gives very good solo performances. In the year 1991, she was presented with this award, which Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award for performing solo. अकेले परफॉर्म करने के लिए उनको ये अवार्ड मिला था, इसका नाम क्या था? रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Now, James Blades is a master percussionist and his words were the ones that we read before we started reading the chapter. जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अभी, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, दैट इज़ जो लाइन कही गई थी वो किसने कही थी? जेम्स ब्लेड्स ने. अकॉर्डिंग टू जेम्स, गॉड टुक अवे एवलिन्स हियरिंग एबिलिटी, बट इन रिटर्न ही गेव हर अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ सेंसिंग साउंड विच इनेबल्ड हर टू बिकम अ ग्रेट म्यूजिशियन.
Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Workaholic means होता है a person जो जिसे आप कह सकते हैं जो काम करने में कभी थकता नहीं है, और कह सकते हैं a person who finds it difficult to stop working. Workaholic जिसे काम करना बहुत पसंद हो, हार्ड वर्क करना बहुत पसंद हो. So Evelyn is very hard working. She does not stop working. So I have just got to work often harder than classical musicians. Now, to be at part with those people who can hear, who are classical musician, Evelyn works very hard. बहुत आप कह सकते हैं हार्ड वर्क किया था एवलिन ने आप कह सकते हैं म्यूजिशियन बनने के लिए. बट द रिवॉर्ड आर एनॉर्मस. एनॉर्मस मीन्स होता है बहुत ज़्यादा बड़े, बिग. एवलिन सेज दैट द रिवॉर्ड्स शी गेट्स फॉर हर हार्ड वर्क आर ह्यूज एंड बिग. जो उनको रिवॉर्ड मिले उनके हार्ड वर्क करने पे वो बहुत ज़्यादा बड़े, ह्यूज थे और बिग थे, बड़े थे, एनॉर्मस थे. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन prisons and hospitals. Even does charity also. आप कह सकते हैं she does charity करती थी. कैसे? She gives free concerts in hospitals and prisoners. prisoners के लिए prison में वो concerts करती थी और hospitals में करती थी. So आप कह सकते हैं ये एक charity work है या social work है जो कि वो करती थी. She also gives high priority to classes for young musicians. So she also takes classes for young musicians, for those children who want to learn music. जो म्यूज़िक सुनना चाहते थे, म्यूज़िक को अपना पैशन बनाते थे, चाहते थे म्यूज़िक में आगे बढ़ना, तो उनके लिए भी वो क्या करती थी, उनको क्लासेस दिया करती थी. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. Evelyn is an inspiration for all. She is an idol. Anne Richlin, who belongs to the Beethoven Fund for Deaf Children, says that Evelyn is an inspiration for those children who cannot hear. And when they get to know Evelyn's story, they feel that they can accomplish everything. They can fulfill all their dreams. So we can say that Evelyn was a role model for these kind of children, deaf children. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Accomplished means achieved. So Evelyn has achieved so much in life that those people who are double her age have also not achieved those many things, that much popularity and those many awards as Evelyn has done. Evelyn was, we can say, a wonderful musician जो कि इतनी छोटी एज में उन्होंने इतना अचीव कर लिया था, जबकि उसके जो आप कह सकते हैं लिखा है डबल एज के जो होते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं. बट येस, एवलिन अचीव्ड मेनी थिंग्स डबल टाइम. लाइक ऐसे जो उसकी एज के डबल हैं उनसे भी ज़्यादा उसने अचीवमेंट आप कह सकते हैं गेन कर ली थी. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. Orchestra is a group of people who are playing different musical instruments, and generally the percussion instruments like the drums and the xylophone are placed at the back end of the orchestra, or they are placed like side at the side. But as Evelyn performs solo, जबकि वो solo perform करती थी, so she gives special performances with these percussion instruments. The percussion instruments have come in front of the orchestra. Now जब वो उन instruments से play करती थी जो कि orchestra में पीछे रखे जाते थे, तो इन एवलिन की वजह से वो जो instrument थे वो भी आप कह सकते हैं सामने आने लगे. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions.
So Evelyn's story is an inspiration to those people who are physically disabled. They feel that if Evelyn can achieve her dreams, even they can. And Evelyn has given a lot of pleasure to her audience by playing such good music. एवलिन ने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया वो लोगों के लिए, जो उस तरीके जो एवलिन की तरह लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है उन लोगों के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर पार्ट 1, एवलिन्स स्टोरी. Very motivational story it was. I hope you got the chapter. So for today, that's it. We'll discuss part 2 in next video. Thank you.